Welcome to this lecture on lattices as in algebraic structure by Dr. Rajesh Singh. Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. So today we are going to do lattices. So we are going to define lattices again, but this time as an algebraic structure. Okay. So is this whiteboard visible to everyone? Yes, is it visible to everyone? Yes, sir. Okay, fine. So earlier we have defined lattices in terms of posets. Now we are defining lattices as an algebraic structure. So we are again giving the definition of lattice, and then we will prove that the two definitions are equivalent. That is, lattices as a poset is equivalent to lattices as an algebraic structure. Okay. So जब algebraic structure होता है तो क्या होता है वहां पे? What do you mean by algebraic structure? So we have some set, right? And then we have some operation. Generally binary operation we take, right? So a set L together with two binary operations. Okay. Two binary operations, cap and cup. So now they are being considered as an, so अब ये supremum infimum भी नहीं है ये these are just two arbitrary binary operations. We don't know what operations they are. We are just notating them by this. Together with two binary operations is set to be a lattice if following conditions are satisfied. Okay, so we have a non-empty set. So okay, let us add this a non-empty set. Okay. A non-empty set L together with two binary operation cap and cup is said to be a lattice if following conditions are satisfied. So first is L1. So सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? कोई भी सेट होता है और बाइनरी ऑपरेशन होता है तो व्हाट प्रॉपर्टीज डू वी सीक फॉर? कौन कौन सी प्रॉपर्टीज देखते हैं हम जनरली? Yes, if you have been given a set and if you have been given a binary operation, then what properties you look for in the binary operation? कौन कौन सी प्रॉपर्टीज देखते हो? कोई भी सेट है, कोई भी बाइनरी ऑपरेशन है, तो हम हमेशा कौन सी प्रॉपर्टीज देखते हैं, कौन कौन सी चेक करते हैं कि कोई है कि नहीं है? बताओ. ग्रुप्स में कौन कौन सी होती हैं? इफ यू ग्रुप में भी हमारे पास एक सेट होता है, एक बाइनरी ऑपरेशन होता है. सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज इन ग्रुप्स? यस, ग्रुप के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी? associativity, existence of identity and inverse. यस, सो वहां पे हमारे पास क्या होता है? क्लोजर होता है, देन वी हैव एसोसिएटिविटी, देन वी हैव existence of identity and we have existence of inverse, right? और अगर कम्यूटेटिविटी आ जाती है तो देन वी से दैट द ग्रुप इज कम्यूटेटिव. ठीक है. सो हम जनरली यही 5 प्रॉपर्टीज देखते हैं. वी लुक फॉर, जब भी हमारे पास कोई सेट होता है, कोई बाइनरी ऑपरेशन होता है, तो वी ऑलवेज लुक फॉर दीज 5 प्रॉपर्टीज. वी लुक फॉर क्लोजर प्रॉपर्टी,
Then we look for associativity, we look for commutativity, we look for existence of identity, and we look for existence of inverse. और जैसे ही हमारे पास दो बाइनरी ऑपरेशन हो जाते हैं तो हम और क्या ऐड कर देते हैं उसमें, इन 5 प्रॉपर्टीज के अलावा we look for the distributivity, right? Distributive. हाँ, डिस्ट्रीब्यूटिव भी चेक कर लेते हैं कि भाई ये ऑपरेशन एक दूसरे के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है. जैसे अगर इफ यू रिमेम्बर रिंग्स में क्या होता है, रिंग्स में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन. बट कई जगह जैसे अगर इंटरसेक्शन और यूनियन लो तो इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन एंड यूनियन आल्सो डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर इंटरसेक्शन. तो वहां पे दोनों चीज होती है. रिंग्स के अंदर multiplication distributes over addition, but other way we don't know कि whether addition distributes over multiplication or not. ठीक है, जैसे रियल में तो addition does not distribute over multiplication, but कहीं पे maybe it may be possible some additive operation may distribute over this, right? So जब भी हमारे पास कोई भी सेट होता है and we have some binary operation, then the first we look for these 5 properties कि भाई इनमें से कौन कौन सी properties हैं. हम क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करते हैं, हम एसोसिएटिविटी चेक करते हैं, हम कम्यूटेटिविटी चेक करते हैं, हम एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स आइडेंटिटी चेक करते हैं, एंड देन वी लुक फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स. सो दीज 5 प्रॉपर्टीज वी ऑलवेज चेक. सो यहाँ पे भी नाउ बिकॉज वी हैव अ सेट एंड वी हैव अ बाइनरी ऑपरेशन, सो वी विल लुक फॉर सम प्रॉपर्टीज. लेकिन क्योंकि वी आर डिफाइनिंग, वी आर गिविंग अ नेम, सो वी विल लीव सम प्रॉपर्टीज एंड वी विल keep some properties. So first is definitely closure property must be there, right? So for all A, B, C belonging to L, first L1 is closure property. So A cap B should belong to L and A cap B should belong to L for all A, B. Yeah, इसको अभी हटाई दो. For all A, B belonging to L, this is closure property. So दोनों के respect में closed होना चाहिए. It should be closed with respect to this operation and it should also be closed with respect to cup. Now second, यहाँ पे idempotency check करते हैं. What is idempotency? A cap A should be equal to A and A cap A should be equal to A for all A belonging to L. This property is called idempotency. Then next, what is the property? Commutativity must be there. So A cup B should be equal to B cup A and या पहले कैप की लिख लेते हैं क्योंकि उसी ऑर्डर में लिख रहे हैं. So A cap B should be equal to B cap A. A cup B should be equal to B cup A for all A B belonging to L. This is commutativity. And fourth property is associativity. So A cap B cap C should be equal to A cap B cap C and A cup B cup C should be equal to A cup B cup C for all A B C belonging to L. This is associativity, right? So closure should be there with respect to both operation. Idempotency should be there with respect to both operation. Commutativity should be there with respect to both operation. Associativity should be there with respect to both operation. Then absorption property. This is very important property. A cap A cup B should be equal to A. इसी के वजह से लैटिस होता है ये बेसिकली, क्योंकि क्या हो गया, A is related to A cup B, so A cap A cup B should be equal to A and A cup A cap B should be equal to A. So this is for all AB belonging to L. This property is called absorption
property. So a cap a cup b, क्योंकि हमारा क्या होगा, a should be related to a cup, मतलब अभी ये हम related बोल नहीं रहे, but this property, because of this property this forms a lattice, ये पूरा पोसेट का equivalent हो जाता है. ठीक है, so these 5 properties must be there. Okay, हमारे पास क्या होने चाहिए, we should have closure property, then we should have idempotency, then we should have commutativity, then we should have associativity, and we should have this absorption property. So these 5 properties must be there for L to be called a lattice with respect to 2 binary operations. अभी binary operation, ठीक है. So now we have again we are redefining it. So हमने पूरे rules को set कर दिया है. Is it clear? Is the definition clear to everyone? Yes. Is this definition clear to everyone? Yes, sir. Okay, fine. So now we are going to prove that the 2 definitions are equivalent. So definition of lattice as an algebraic structure is equivalent to definition of lattice as a poset. So 2 definitions are equivalent. So how to prove this? So suppose L with cap and cup is a lattice as an algebraic structure. Okay, so first we have assumed that this is a lattice as an algebraic structure. So these 5 properties that we have just mentioned, they are satisfied. To show L, so we have to define some partial order relation. So to find it, we have to define a partial order relation such that L is a so we need to define a partial order relation this on L such that L is a lattice. Okay, so we have to define some relation in this. So कैसे define करेंगे, cap और cup का use करना है, we have to use cap and cup. So how to define this relation? A is related to B कब होगा, cap और cup के respect में define करना है, if and only if A cup B is equals to B. yes, A cup B is equal to B and A cap B is equal to A. ठीक है, so we have to define like this. We have to define like this that it क्योंकि partial order relation define करना और cap और cup के terms में define करना है, तो we can define like this, right? और ये हमारा उससे फिर हमें पता भी है कि यही define करना चाहिए हमें, क्योंकि उसमें भी सुप्रीमम जो हमारा cup होता है वो सुप्रीमम होता है, so it comes out to be equal to B और ये A आ जाता है. ठीक है, clear? So define a partial order relation. Oh sorry, define a relation. Partial order तो prove करना होगा हमें. Define a relation on L as follows. A is related to B if and only if A cap B is equal to A and A cap B is equal to B for all AB
belonging to L. So now we have to show this relation is a reflexive partial order relation. मतलब हमें show करना होगा it is reflexive, it is antisymmetric and it is transitive. So why it is reflexive? A related to A क्यों होगा? Yes, why A will be related to A? Reflexivity show करनी है. For any A belonging to L, yes, why A will be related to A? हमें शो करना है A is related to A, so why it will be related to A? मतलब हमें शो करना है A cap A is equal to A and A cap A cap A is equal to A. So क्यों होगा ये? Why it is so? We are given that it is a lattice as an algebra. So उसका यूज करना होगा. How? A cap A क्यों होगा? अभी ये देखो ना, अलजेब्रा है तो मतलब कि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है ना. आइडम्पोटेंसी बाय आइडम्पोटेंसी. ठीक है, क्योंकि बिकॉज इट इज गिवन टू बी एन अलजेब्रा, सो इट इज देयर, दिस इज देयर, सो दिस इंप्लाइज A is related to A, so hence this is reflexive. Now antisymmetric. So let A be belonging to L such that A is related to B and B is related to A. We have to show that A is equal to B. Now what A related to B implies as an algebra? A related to B का मतलब क्या है? A cap B is equal to A and A cap B is equal to B and B cap A is equal to B, B cap A is equal to A. So now A is equal to A cap B which is equal to B cap A by commutativity, क्योंकि commutativity है ना हमारे पास, and B cap A is equal to B यहाँ से from star. ठीक है, so thus A is equal to B, so hence this is anti-symmetric. A third property, we have to talk about transitivity. So let A, B, C belongs to L such that A is related to B and B is related to C. So what does this imply? A related to B का मतलब क्या है कि A cap B is equal to A and A cap B is equal to B and this implies B cap C is equal to B and B cap C is equal to C. अब हमें क्या शो करना है? We have to show A is related to C, मतलब A cap C को हमें शो करना है that it is, so we will start with A cap C और उसे हमें C शो करना है और A cap C को हमें A cap C को A शो करना है और A cap C को C शो करना है. Now consider, so this is double star, make it double star. So consider A cap C. So A cap C, अब यहाँ पे C, क्योंकि आगे प्रोसीड करने के लिए क्या करेंगे हम, C को B cap C से रिप्लेस कर देंगे. यहीं पे C है बस हमारे पास. So this is A cap
B cup C. Now अब क्या करोगे? वैसे इसको रिप्लेस करने में, क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी यूज नहीं कर पा रहे हैं, सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन रिप्लेस दिस A. दैट वुड बी मच बेटर. सो वी कैन रिप्लेस A cap B cap A. this one, this we can use. So sorry C, क्योंकि अब तो एसोसिएटिविटी यूज कर पाएंगे ना हम. सो दिस इज A cap B cap C. एसोसिएटिविटी यूज कर ली हमने यहाँ पे. And this B cap C is now B. So A cap B from double star again, and A cap B is our A. So A cap C is equal to A आ गया. Now we will start with A cup C. So अब कप वाला रिप्लेस करना है. So ये वाला अब ये वाला यूज कर लेंगे, क्योंकि कैप और कप मिक्स कर देंगे तो फिर काम नहीं कर पाएंगे हम. So B cup C from double star, and now associativity, right? And now this A cup B is B. So this is B cup C, and this is C from double star. So it follows from double star. So hence A cap C is equal to A cup C is equal to C. So this implies A is related to C. Hence this is transitive. So thus L is a coset. अब हमें सुप्रीमम और इन्फीमम वो करना है. सुप्रीमम क्या होगा? सुप्रीमम फॉर एनी टू एलिमेंट्स. अब क्योंकि पोसेट तो शो कर दिया, नाउ वी हैव टू शो इट इज द लैटिस. सो वी हैव टू शो दैट सुप्रीमम एंड इन्फीमम एग्जिस्ट. सो व्हाट विल बी द सुप्रीमम ऑफ एनी टू एलिमेंट्स? ए बी सुप्रीमम का क्या होना चाहिए? Now we need to show that L is a lattice. That is, for any pair of elements AB in L, supremum of AB and infimum of AB exist in L. ये शो करना है हमें. ठीक है. So we have to show that supremum of AB is some element and which belongs to L. So क्या होगा? So let AB belongs to L be any two elements. So we start with any two elements. What will be supremum of AB? अपने algebraic structure के terms में क्या होना चाहिए supremum of AB और infimum of AB? It should be A cup B and it should be A cap B, right? यही होना चाहिए. We expect it to be this कि supremum of AB should be A cup B and infimum of AB should be A cap B, right? Are you able to follow? Yes. समझ आ रहा है या नहीं आ रहा किसी को? Yes, sir. To others, Janvi, Anushka, Tushar, are you able to understand this? अभी तक समझ आ रहा है? Janvi? Yes, sir. Okay, fine. So now we have to show this. ठीक है. So अगर ये शो कर देंगे तो, क्योंकि this by closure property this belongs to L, also by closure property this also belongs to L. So हमें बस शो करना है कि supremum of AB जो है हमारा वो A cup B आ जाए और infimum of AB हमारा A cap B आ जाए. That is, we have to show that A cup B is an upper bound for A and B and it is the least upper bound. So ये दो काम करने हैं हमें.
We have to show that a कब b, यहाँ पे क्योंकि this is algebraic operation, ये हमारा सुप्रीमम वाला नहीं है जो हमने पहले डिफाइन करा था. This is our algebraic operation. This is also algebraic. So this is some element. Our claim is that supremum of AB will be this element. So उसके लिए हमें क्या शो करना होगा कि A is related to A cup B, B is related to A cup B, and A cup B is the least upper bound of this. Is it fine? So why A will be related to A cup B, कोई बता सकता है? क्या शो करना होगा हमें कि A cup B is equal to A and A cup B. Oh, now by absorption property we have क्या होता है A cup B is equal to A and A cup, ठीक है. So this is by absorption property. Also A cup B क्या होगा? This is A cup B by associativity, and this happens to be A cup B आइडम पोटेंसी का यूज करके. सो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 10. सो A cup B is equal to A and A cup B is equal to A cup B. So this implies A is related to A cup B. So A cup B is an upper bound of. So this implies, ठीक है. Similarly B is related to A cup B क्योंकि वही सेम कम्यूटेटिविटी और वो उसके वजह से सारा सेम हो जाएगा. So B is related to A cup B. So this implies A cup B is an upper bound of AB. अब हमें शो करना है it is the least upper bound. So let C belongs to AB be any element that is C is an upper bound. So this implies A is related to C and B is related to C. So this implies A cap C is equal to A cup C is equal to C, B cap C is equal to B, B cup C is equal to C. ठीक है? So this is this. Now we have to show A cup B is related to this C. ये शो करना है because we have to show that this is the least upper bound. So we have to show A cup B is related to C. उसके लिए क्या शो करना होगा? रिलेटेड हमने किस तरह से डिफाइन करा हुआ है कि हमारा रिलेशन इस तरह से डिफाइंड है ना. if you remember how we have defined this relation, that A is related to B if and only if A cap B is equal to A cap B is equal to B. So if we have to show that A cup we have to show that A cup B is related to C, so we have to show A cup B cap C is equal to A cup B and A cup B cup C is equal to C. So that we have to show. So consider, so we start with A cup B cap C. So कौन सा यूज करें यहाँ इन सब में से, क्योंकि एब्जॉर्प्शन यूज कर सकते हैं. So उसके लिए कौन सा पुट करें? We want it to be A cup B. यहाँ पे A cup B आ जाना चाहिए. C की जगह कौन सा यूज करें? This one or this one? Sir, by transitivity we can write it A cup B cap C. Then we can use B cap C equals to नहीं, 0. यहाँ पे वो नहीं है हमारे पास ना, एसोसिएटिविटी नहीं यूज कर सकते क्योंकि इधर कप है और इधर कैप है, साथ में नहीं यूज कर सकते. So instead of starting with this, I think we should start with this because उसको यूज कर पाएंगे. So we will start with this A cup B cup C. So first let us start with this. Okay, इसको C show करना है हमें. Now we have to use one of these. So which one we shall use?
यहाँ पे एसोसिएटिविटी यूज कर सकते हैं हम. So this is this, and now B cup C is C. So this is C. Okay, this is due to associativity, and this one, these two from this our triple star. ठीक है. So ये हो गया कि this is there. Now we can go to the next step. Now consider A cup B cap C. So अब क्योंकि C हमारा इससे आ गया ना, C को अब इससे कर सकते हैं हम, C में ये यूज कर सकते हैं हम. That's why this is the trick. So we have to first prove this. So then this is A cup B cap A cup B cup C. ठीक है, using last step. Last step से आगे C is equal to this. So we have done this. Now A cup B cap A cup B cup C. So this we can apply absorption property here. So this is equal to A cup B by absorption property. Okay, देखो ये A हो गया, cap A cap cup C. So absorption हो गया. This element is this in cup this. ठीक है, so absorption लगा सकते हैं, right? Yes, are you able to understand this or not? समझ आया क्या करा हमने यहाँ पे? We have used the trick. So हमने क्या करा लास्ट स्टेप में, क्योंकि हमने ये प्रूव करा था. So C को हमने इससे रिप्लेस कर दिया, and then we applied the absorption property. Absorption property हमारी यही है ना, A cap A cup B is equal to A. So मतलब this element should be here and cap cup. So then ये सेम आ जाता है. So यहाँ पे A की जगह we have A cup B and C की जगह हमारे पास B की जगह we have C. So same thing, right? Is it fine? So thus we have shown that A cup B cup C is equal to C and A cup B cap C is equal to A cup B. So this implies A cup B is related to C. Hence A cup B is least upper bound of AB. That is A cup B is equal to supremum of AB. Now by closure property, A cup B belongs to L. So this implies supremum of AB belongs to L. So similarly, it can be shown that infimum of AB belongs to L. इसको एक बार रफ में ट्राई कर लेना खुद से प्रूव करने की, सेम लाइंस पे, लेकिन थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे. सो ट्राई कर लेना कि कैसे infimum को भी शो कर सकते हो. ठीक है, क्योंकि मे बी समटाइम्स एग्जाम में तुम्हें यही दे दे क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत लंबा प्रूफ है, तो पूरा तो नहीं देंगे लेकिन कुछ इसमें से बीच में से उठा के दे सकते हैं. ठीक है, so maybe they might define this relation for you and they might ask you to prove this to show that infimum of AB belongs to L. ठीक है, so maybe पूरा ना दे because this proof is very long, but they might give you some step to prove it, so you should know how to prove each and every step of this theorem, right? So thus L is a lattice as a poset. ठीक है, so poset के टर्म्स में lattice हो गया. हमने अभी शो करा था, हमने लिया था कि it is a lattice as an algebra, and now we have shown that it is a lattice as a poset. अब conversely we will assume that it is a lattice as a poset and we will show that it is a lattice as an algebra. ठीक है, conversely assume that
L is a lattice. ठीक है? So then we need to define two binary operations, cap and cup on L, such that L cap cup is a lattice as an algebra. So हमें ये काम करना है. We have to define these two relations. So define cap and cup on L as follows. कैसे define करोगे? A cap B को क्या define करोगे? And A cup B को क्या define करोगे? Yes, what should we take? A cap B? पोसेट के टर्म्स में लेना है. तो पोसेट के टर्म्स में क्या होता है? ए और बी अगर हमारे पास है तो क्या होगा पोसेट लैटिस में एज अ पोसेट? ए कैप बी क्या डिफाइन करें? इनफीमम ऑफ ए बी. ठीक है ना, क्योंकि ये एग्जिस्ट करता है. एंड दिस वी कैन डिफाइन एज सुप्रीमम ऑफ ए बी. So now we are defining it. Okay, so this is our binary operation. We are defining it as an infimum. This is our binary operation. We are defining it as a supremum. So this is how we have defined it. So now we have to show that it is a lattice as an algebra. So first we have to show. So since L is a lattice as a poset, since L is a lattice as a poset, so for any AB belonging to L, supremum of AB and infimum of AB belongs to L. So this implies A cap B, sorry, A cup B and A cap B belongs to L. So that hence closure property is satisfied. ठीक है, so closure property show कर दी हमने, या ऊपर लिख लेते हैं कि हम closure property show करने जा रहे हैं, then you will understand it better. So first we are going to show closure property. ठीक है, so closure, hence L is closed with respect to cap and cup, these two binary operations. Now next property is, what is the next property as an algebra? नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है? हमने क्या डिफाइन करा यहाँ पे? आइडेम्पोटेंसी. सो वी हैव टू शो दिस ए कैप ए इज इक्वल टू ए एंड ए कप ए इज आल्सो इक्वल टू ए. सो आइडेम्पोटेंसी. So let A belong to L be any element. So consider A cap A. So this is infimum of AA, और infimum of AA क्या होगा? Is A, right? Similarly, A cup A is equal to supremum of AA, which is equal to A. So hence idempotency holds. ठीक है, so idempotency हो गई. Now commutativity. For any AB belonging to L, A cap B is equal to infimum of AB. अब infimum of AB को हम क्या लिख सकते हैं? Infimum of BA, which is equal to B cap A, and A cup B is equal to supremum of AB, which is equal to supremum of BA, which is equal to B cup A. So hence cap and cup are commutative over L. ठीक है, so commutativity भी हो गई. Now we look for associativity.
So for any A, B, C belonging to L, consider A cap, B cap, C. So what will be this? This will be infimum of AB comma C. So this is nothing but इन दोनों में से जो भी छोटा होगा फिर इसको C के साथ कंपेयर करोगे तो ओवरऑल इन तीनों में से कोई भी छोटा होगा वही आ जाएगा, राइट? And similarly A cap B cap C is equal to infimum of A infimum of BC, which is equal to infimum of ABC. So this implies A cap B cap C is equal to A cap B cap C. Similarly, we can show that A cup B cup C is equal to A cup, sorry, right, B cup C. Hence, associativity holds. So we have shown 4 properties, right? We have shown closure property, we have shown idempotency, we have shown commutativity, we have shown this associativity. Now last property is absorption property. इसमें क्या शो करना है हमें? For any A, B belonging to L, consider A cap B. So this we have to show that it is equal to A. So this is infimum of A cup B, which is equal to infimum of A supremum of AB. So what will be this? Infimum of A supremum of AB. What it will come out to be? सुप्रीमम ऑफ ए बी का मतलब क्या है? या तो ए होगा या बी होगा. ए कब होगा? जब ए बड़ा होगा. बी कब होगा? जब बी बड़ा होगा. तो अगर ए आ गया तो ए और ए में इनफीमम निकालोगे तो ए आ जाएगा. अगर बी आ गया तो मतलब बी ए से बड़ा है तो ए और बी में इनफीमम निकालोगे तो ए आ जाएगा. सो इन आइदर केस यू विल गेट ए, राइट? Similarly, when you will do this A cup A cap B, so this will also come out to be, this is supremum of A cap B, which is supremum of A infimum of AB. So जो छोटा वाला है वो बाहर आएगा और उनमें से बड़ा लेना है तो obviously A ही आएगा यहाँ पे B. So hence A cup A cap B is equal to A cap A cup B is equal to A. So absorption property is satisfied. Thus, L cup cap is a lattice as an algebra. Clear everyone? चाहे इसे इस तरह से कर लो, चाहे एज एन अलजेब्रा कर लो या वैसे कर लो, दोनों ही तरह से इट इज देयर. इज इट फाइन? यस सर. सबको प्रूफ क्लियर है ना? कि इसको ढंग से रिवाइज करना, पूरा ट्राई करना प्रूफ करने की हर एक स्टेप, देन इट विल बी इजियर फॉर यू टू फॉलो. उतना डिफिकल्ट नहीं है, बस बहुत लंबा है. सो समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज यू इट जस्ट लीव्स योर माइंड. सो उसको दोबारा करना बहुत इजी है, उतना कोई डिफिकल्ट नहीं है. और ये सारी एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से याद कर लेना बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज इट अ लॉट. तो एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी बहुत मतलब दिमाग में ऐसे बैठ जानी चाहिए कि कहीं भी दिखा तो बस इजीली हम उसको यूज कर सकते हैं. ओके, so anyone wants to ask any question?
Yes, anyone wants to ask any question? Okay, fine. So there are no questions. So I'm ending this class. So bye everyone. Have a good day. And now we meet Thank you, tomorrow. sir. Thank you for watching this video. Please subscribe to our YouTube channel, Online Learning, to stay updated and share with your friends. Happy learning through online learning. To watch more, click on any of these cards. Thank you once again.